हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम ब्लैक पिंक आईलाइनर मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। देन आई एम अप्लाइंग नायका प्राइमर। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। मैं यहाँ पे नायका फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं मेकअप फिक्सर स्प्रे करूँगी। इससे हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाता है, क्रैक्स नहीं पड़ते हमारे फेस पे, ना लाइंस पड़ती हैं। नाउ आई एम यूजिंग माई ग्लैम के प्ले लिप ग्लॉस एज अ लिक्विड ब्लश। इसका पिगमेंट और कलर बहुत ही अच्छा है। Now I am using NY Base HD Spotless Concealer. Now I am using Nykaa Contour Stick in the shade number 07. Now I am spraying मेकअप फिक्सर ताकि मैंने जो लिक्विड कंसीलर, लिक्विड ब्लश एंड कॉन्टोर यूज़ किया है वो मेरा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। Here I am using Revolution Banana Luxury Powder. लूज पाउडर अप्लाई मैंने कर लिया है। मैं एक्सेस पाउडर को रिमूव कर लूँगी ब्रश की मदद से। Now I am contouring my nose with my Glam Chisel It Contour Kit. Now I am applying blush. Now I am applying highlighter from NYX 3 steps to sculpt. अब मैं क्रीज एरिया पे न्यूट्रल ब्राउन शेड से ब्लेंड कर लूँगी। Now I am applying liquid liner. You can use any liquid or sketch liner. अब मैं ब्लैक लाइनर के ऊपर ही एक और लाइनर लगाऊंगी एंड मैंने यहाँ पे मैट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है। पतले लाइनर ब्रश की मदद से हम सेम एज इट इज़ इसी के ऊपर ऐसे लाइनर लगा लेंगे।